Welcome everyone to this special episode of by Omkara Capital. It's Omkara's first anniversary, and we have got a 20-year-old market hunk. Who I can say, full they'll say he's a market hunk who's not afraid to speak his heart out. And actually, Ranveer Singh envies him, or I can say that Ranveer actually has copied his dressing style. Please welcome the most loved one, ever smiling and a voracious reader, Samir Arora, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Varinder ji, and very, very happy birthday on your first anniversary, and maybe 100 more to follow. Make an institution. Very good. No, sir. Thank you so much. आपका आशीर्वाद है सर हमेशा से, but I'm very glad that आज मौका मिल रहा है आपसे सीखने के लिए सर. हमारे ओमकारा में बोलते हैं कि हम we will try to understand things from people like you in a very very simple language. और मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप हमेशा जो होता है दिल से ही बोलते हो. हम तो सिंपल लोग हैं, सिंपल बातें ही करते हैं. पक्का सर. So I will not jump into the market क्या लग रहा है, ये US क्या लग रहा है, all those things, because I think you are much more important than that as a person. So I have seen you since last maybe 10-12 years. A lot of people don't know actually who Samir is. So if I can start from the beginning, or I wanted to understand you as a person, because सबको लगता है यार कि मार्केट के जो बहुत बड़े महारथी लोग हैं वो कुछ अलग ही आटे की चक्की का किसी अलग ही चक्की का आटा खाते हैं. तो पहले तो मुझे ये बताइए सर, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से हो आप, कैसे मार्केट में आए? So I'm from Delhi and I used to study at St. Columbus School. और मेरे पहले जो कुछ चीजें हुई हैं लाइफ में वो just random हुई हैं. For example, I had no plans of going to IIT, but everybody in my class was sitting for the test. उस वक्त बहुत ज्यादा लोग ये क्लासेस नहीं करते थे, मैंने तो एक भी नहीं करी, and वहाँ पे भी only one single classes used to be there. But anyway, I didn't do that. I just sat for the exam and I got IIT Delhi engineering. So then you are not supposed to refuse it. Yeah. I mean, supposed to mean you don't feel like refusing it. Although I was actually in my mind trying to be a CA later on in life. I thought that I'd be a CA. And anyway, so then what happened, I'm in the first batch of 10 plus 2. Okay. So हमारे batch में was the first batch where you could go to IIT after 11th and not complete school, because first batch tha. So they what to do, because if you don't have graduates from 10 plus 2, because 10 plus 1 mein hai. So one major reason for going to IIT was that I did not have to complete school, and I left after 10 plus 1 in a 10 plus 2 program, which actually many others did. JX भी था मेरे साथ, 15-20 हमारे Columbus से थे. So that is how I landed up at IIT. So IIT, I treated it more as graduating from there. But I discovered my interest when I went to IIM, because in the end it turned out that I really did like finance, and I was a teaching assistant TA, and I would get I think 500 rupees per semester for teaching students. ये कौन से साल की बात कर रहे हो सर आप? ये हो गया 83 to 85. Wow. So after that, I was working in Delhi, and then I had no plans of doing anything. Then my sister, who's from Delhi school, was going to US for a PhD in finance. Sorry, PhD in economics. So मैंने कहा तू क्यों जा रही है, हम भी जाएंगे. So I also applied. So we both went in the same year. She went to USC and I went to Wharton. So ये सब मैं तो follow इधर-उधर करके पहुंचा. बाद में मेरे अपने interest मेरे को discover हुए. In that way, I'm a late bloomer. And then after studying for 3 years at Wharton for a PhD, 2.5 years, during that time, PhD पढ़ा. My God, I would have taken me another 1.5 years to complete it, hopefully. But anyway, I applied for jobs and I got a job with Alliance Capital. और तब मुझे समझ आई कि ये चीज ठीक है. Okay, आप तो ऐसा कर रहे हो सर, IIT, IIM और Wharton, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो केक वॉक नहीं, चलो यार मिल गया वहाँ पे, हमने कर लिया वहाँ पे. नहीं मिला नहीं. It's just that I was also discovering. For example, after Wharton, or I didn't complete. I got a master's degree from Wharton, but I didn't complete my PhD. But because I also applied for a job at McKinsey, and I also applied for a job at Alliance. Let's say. Got it. Right? Now, if I got a job with McKinsey, how would it have developed? मुझे नहीं पता ना, क्योंकि उस वक्त इतना नहीं पता था कि हमें ये करना है कि वो करना है.
बट जो मिला फिर वो बड़ा मजा आया। तो यहाँ तो सर हमारे बच्चे मेरे ख्याल में 10 साल के होते नहीं है, माता पिता अभी से डंडा मारने लग जाते हैं कि ये करना है, ये करना है, वो बनना है, वो बनना है। नहीं, वो बनना तो है, लेकिन वो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचती द स्टोरी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज I would not have known exactly. Maybe I would have enjoyed that also. Who knows? But finally, I landed in the place where I have not even for a day, from Alliance days to today, not even for a day I consider it work. Not even for an hour. No, हमने अलायंस में जो काम किया, हमारे को स्टेक नहीं थे, हमारी कंपनी नहीं थी, उसको हम इससे बहुत ज्यादा वो करते थे, बिकॉज उस दिन से समझ आया कि ये तो बहुत ही बढ़िया काम मिला है। so until you joined Alliance, you had no clue about the stock markets? No. I had even because I am from IM, so वो तो था. In fact, in the IM days, I had applied for IPOs also. We used to also apply for as a group for IPOs. So I had got Modi Xerox के shares in the IPO, and then when I was working in India, I had bought 2-3 shares. but पैसे बड़े zero होते थे ना जेब में. I mean, there was no salary, was what 4,000 rupees or something. उसमें आपने 2,000 के शेयर खरीद भी लिए तो कौन से तीर मार लिए. But that way I bought 2-3 shares. I got some Rathi alloy shares and some other crappy shares जो उस वक्त लोग बोलते थे. But but there was nothing, because it was not either a career or anything meaningful that is supposed to change your life, even if you have done it for 10 more years. You need a little bit of money to make money. Of course. But sir, okay, people like you, so you came into Alliance in 1986, right? No. I went to US now. So I joined Alliance in New York in 1991. Oh, 1991. Because मैंने पहले इंडिया में काम किया, फिर उसके बाद मैं वाटर में फिर से पढ़ा, तो मैंने एक्चुअली 5 साल बियॉन्ड MBA पढ़ा प्लस वर्क to get to the first job which now you can get after being an MBA. Wow. But then I compressed my growth, I think. For example, I became VP in 2 years. Normally it would have taken them 3-4 years if you were a fresh MBA. तो 1-2 साल ऐसे cover हो गए, but पूरी life तो ना cover हो जाती है if you were. But that is, in those days, that was a best that we have ever done. Anybody could do, so it's okay. अब उसको आज के ग्रुप से, because अब वो jobs यहाँ पर direct मिल रही हैं, right? Yeah. At that time in 85, the jobs you're getting are from levers or some bank or something, but not like investment jobs or consulting jobs or all these good. Got it. So the first relationship with stock market was due to Alliance. A serious thing is from Alliance. As I said, I bought some few stocks even in the IM days and all, but I never really bothered about that as being some great passion of mine, if you want to look at it. Got it. How, how much time does it take a person like you to become a serious investor? मतलब जैसे आपने बोला कि पहले मैंने कुछ भी ले लिया था, कुछ थोड़ा बहुत लेता रहता था मैं. So when you came, first thing is आपको उसमें passion, मेरा pre Alliance passion नहीं था. Okay. Market नहीं था actually. That's what I'm saying. I have discovered these things. So in that sense, you can say for me, the job led me to the market, and I discovered my strengths or my success or whatever because of the job first. Normally people first like investing, and then they seek a job in that function. मेरा उल्टा हुआ है. That's what I'm saying. That's why everybody's life is a bit different. But once within 4 or 5 months of joining Alliance to now, not even for one day, I felt that it is some work that I'm doing. That way. Oh, lovely. So was there any defining moment, sir, in your life जहाँ पे आपको लगा, boss, this is what I want to do? कुछ ऐसा कुछ होता है, कुछ चमत्कार? वो तो बड़ी बार हुआ है जी, एक बार नहीं 10 बार हुआ है. For example, I went, and mostly it is related to India or Indian market. I'll tell you how. So I went to the US to study. Effectively, you can say to be able to work in the US. Correct? Because otherwise, extra पढ़ाई करके वापस इंडिया आ रहा तो हमारा MBA. I was a gold medalist. And so the thing is that when you went there, and I became an analyst for Australia, New Zealand, and Japanese market. So उसके बाद in 2 years, Indian market had already opened in 91, and वो 93 में वो कहते हैं जी आपने इंडिया जाना है. अब उस वक्त मेरे को तो ग्रीन कार्ड नहीं मिला था. Effectively, you can say I had gone there for a green card in those days, or a job, whatever you want to call it. I took that bet and said मैं तो इंडिया जा रहा हूँ, ठीक है. And then, so 93 में हुआ. फिर 98 में I became head of Asian markets, and from India I moved to Singapore. So the thing is, normally the Indian guy who is working in an American company and moving to Singapore quickly अपने आप को disown कर लेता है from
इंडिया, ये आप अभी भी देखे होंगे, अभी भी होते हैं ऐसे लोग। बहुत है हमने सर। कहा नहीं जी, हम तो इंडिया सिंगापुर से करेंगे, लेकिन हम बड़ी जॉब भी चाहिए, लेकिन मैं इंडिया भी करूंगा। सो 98 to 2003 आई वाज मैनेजिंग इंडिया फंड फ्रॉम सिंगापुर। देन 92 में अलायंस कैपिटल डिसाइडेड टू सेल द इंडिया बिजनेस। मैंने नहीं, मेरे को तो इंडिया करना है, मुझे वो सिंगापुर नहीं करना। ऑल ऑफ दीज हैव बीन वेरी डिफाइनिंग फॉर मी, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव पेड ऑफ बिग टाइम। अब हम जो आज तड़ी में घूम रहे हैं, बिकॉज ये 2-3 बेट्स इतनी बड़ी चली। उसके बाद when I started Helios, because I had done 5 years of Asia. हीलियोस कब चालू हुआ था सर? 2005. Okay. So when I started Helios, which has been started with the chairman of Alliance Capital and the chairman of Alliance India, तो उस समय सब लोग कहते थे कि why don't you do an Asian fund? Because Asian fund में अगर 100 rupees आएंगे, in a big picture sense, तो Indian fund में आएंगे around 20 rupees. That is the weightage of India. I mean, if I was doing emerging market, and all the Indians here have started Asian funds or emerging market funds. हमने कहा नहीं, हम तो नहीं खाली इंडिया करेंगे। Wow. अब वो okay, some things would have worked even bigger, smaller, depends on time. But ये सब चीजें मेरे को अब लगता है, if you ask me, that these things and those days were not straightforward decisions. Yeah, agree. In hindsight, they have worked, because once if it works, then all decisions look as if they worked. It's not necessarily उस वक्त के लिए better होती, कोई और उससे भी better होती, who knows? That's too much fun. So is there anyone who you give credit sir to where you have reached? कि कोई ऐसा रोल मॉडल होगा आपका, कोई होगा कि हाँ जिसके कारण आप यहाँ पे पहुंचे? Like apart from I would say it depend करता है, क्योंकि पहले तो आप कहोगे कि जी हमारे फादर के ऊपर है, because you know at that time there was no money. We took because we were making a house, we took a 50,000 rupee loan from HDFC. I was the guarantor. और फिर वो 50 खत्म हो गए, 15,000 रुपए का भी लोन लिया। ओके, तो वो आप ऐसे कहो तो उस वक्त के लिए वो है। बट इफ यू से कि स्टॉक मार्केट का रोल मॉडल कौन है, कि भाई मार्केट का रोल मॉडल या नॉट रोल मॉडल जिससे हुआ है, वो एज आई सेड फॉर मी दैट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम अ जॉब। सो जॉब में आप आ गए तो आप जॉब कर रहे हो, प्लीज यू स्टार्टेड एंजॉयिंग द जॉब। So if you now go to the next level and say investing में कौन रोल मॉडल रहा है, तो इन्वेस्टिंग में क्या है कि in the 90s there was only one role model, that was Warren Buffett, because only Warren Buffett books were available, there was no online, so you can only either read him or not read anything. So in that sense, for everybody who started in the 90s, which is nearly everybody in India, because that's when our market opened, everybody was reading Buffett. And then over time you discover कि और भी अच्छे वो हैं models of investing, you know, you Soros, so 3-4 हो जाते हैं which from an investing point of view role model. Got it. But otherwise many people have helped along the way to make us reach where we are, of course. सर आपको जब भी मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, सुनता हूँ, आप हमेशा खुश रहते हो और you know, बट मैं ये सोचता हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं, जब ऐसा कोई स्ट्रेस आता है, स्टॉक मार्केट में भी स्ट्रेस होता है, देयर आर टाइम फ्रेम्स व्हेन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे यू वांट, कभी जो भी अभी मार्केट में चल रहा है आजकल, वॉर का हुआ या इंटरेस्ट रेट्स का हुआ जो अपने हाथ में नहीं है, हाउ डू यू डील विद मार्केट के स्ट्रेस को मैं even 2008 में our NAV was down so much, we had redemptions of hundreds of millions of dollars. मैं तो सो जाता था आराम से 11 बजे, I can sleep. That for whatever reason I have no stress. और लोग पहले क्या करते थे, क्योंकि आई एम अ लार्ज इन्वेस्टर इन माय ओन फंड, लोग कहते हैं ओ ये पर्सनल इन्वेस्टेड है ना, तो ये बड़ा कॉशियसली बिहेव करेगा, हम अपने पैसे को गिनते ही नहीं है। In this sense, it doesn't matter. These things don't matter to me, whether on behalf of the investor or on my own account. So अब ये पता नहीं कैसे हुआ है, but I think this happens with time, because क्या होता है financial markets में, particularly when you are doing a job initially at Alliance, हमने 2 रुपए देखे नहीं और वहां आप 100 करोड़ की बातें कर रहे हो, फिर 1000 करोड़ की बातें कर रहे हो, फिर in 2003 $1.6 billion मैनेज करते हैं, 50 मिलियन, आपको कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है कि वो यूनिट्स क्या है। सही है। अभी अब जैसे अब कोई आजकल के जो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, पहले तो मैं होता था किसी जमाने में, बट आजकल के जो है वो 500 करोड़ की आईपीओ में शेयर खरीदते हैं। उस वक्त हमारे लिए 50 करोड़ या 25 करोड़ होता था बड़ा अमाउंट, राइट? सो व्हेन यू आर डीलिंग इन दोस नंबर्स, यू लूज और यू गेट कंफर्टेबल, whatever be the word, but that stress I don't have. But of course in the last 15 years, कई बार I like
a little bit की market गिर जाए ताकि मेरा long short fund सब longs को पीटे. So I have not felt overly bad about having. But even in the early part of the career also, you were not. नहीं यार पे हो गया. हम थे मार्केटिंग करने हैं, उस टाइम पे मार्केटिंग करने जाते हैं. तो एक मुझे कहता है कि you fund managers sitting in your office, this is not one on one. These will be like 100 people. Some bank has called or whoever has called, and you have to tell your story. So the actual story that we told was it was a tech fund. Tech का ये universe है 100 stocks का. हमारा fund is third best among those 100 investments you could have made. Okay, ऐसे करते थे हम कि भाई आप कोई भी टेक स्टॉक लेते या हमारा फंड लेते. Our fund was not in the middle like a normal fund would be कि भाई weighted, you know, उसके यूनिवर्स हमारा थर्ड और फोर्थ बेस्ट था. ओके एनीवे, बट उसको आंसर देना है. तो वो कहते हैं यू फंड मैनेजर सिटिंग इन योर ऑफिस द होल डे. अभी उसने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था. मैंने कहा एयर कंडीशन ऑफिस. क्या होता है? If there are like 100 people in that room, not everybody has lost money. Some have come new to the meeting because the bank called them. Some have invested, some have lost, some have redeemed at a good time, whatever. Or some have invested in some of our other funds. तो अच्छा फिर एक और आया. कहते हैं कि I invested in your fund in March 2000. What will you do for me? तो मैंने कहा जी I will pray for you. तो ऐसी ऐसी कर करके कहानियां सुना के हमने सारे वो दिन. But bottom line is निकाल दिए. And सब खुश होते थे एंड में कि भाई कुछ रैशनल एक्सप्लेनेशन देने आए हैं और एटलीस्ट सॉरी कहने आए हैं. By the way, just to tell you one more thing. So one bank, I think it was Citibank in Bangalore. So he said, sorry बोलना लेकिन ज्यादा सॉरी मत बोलना. पिछले हफ्ते भरत शाह आया था, उसको बड़ी गालियां दी थी. तो ओवर मत करना, कह देना आई एम सॉरी बट करके फटाफट नेक्स्ट लाइन पे चले जाना. बट तब से हम भी सुधर गए हैं क्योंकि बट वो सेक्टर फंड होता. बट व्हाट आई एम सेइंग इज वी हैव सीन ऑल दीस थिंग्स and whatever somehow that part has not we have done it with the dignity and been able to explain our whatever. सर पहला स्टॉक कौन सा था जो आपने लिया था? So पहला मैं पर्सनल नहीं बोल रहा, because I told you personal मेरा IPO था, वो Moody's Rocks के शेयर मिले थे. So if I say in the fund what did I buy, because we started with a fund which was originally it was called India Liberalization Fund, and its idea was to buy privatizations and infrastructure. जो दोनों चीजें मैं नहीं करता हूँ. So the absolute first stock I bought in my life is MTNL. Wow. At a price of 310 rupees or so, Ota Mati, in December of 1993. Can you imagine the money? For the fund, I mean, not for me. I never bought. Well, I bought one or two stocks only in my life. Mostly फिर मैं फंड में डालता था. But so December 93 में मैंने सबसे पहले MTNL लिया. Wow, very nice. And कौन सा स्टॉक होगा सर जो आपके इनिशियल डेज में सबसे बड़ा लेसन दे गया आपको? यही दे गया ना, क्योंकि 2-3 सालों में समझ आ गई ये गलत स्टॉक्स है ये सारे. सो फॉर्चुनेटली मुझे ये ना ये प्राइवेट सेक्टर कंपीटिंग विद गवर्नमेंट की थीम मेरे को पकड़ा. सो वी मेड बिकॉज आई सॉ आवर ओन alliance competing with the UTIs of that time. तो उसको क्या होता था that UTI would give its top 10 holdings once every 6 months. And its annual accounts would come, which would be 2-3 months after the March is over. तो जुलाई में आपको पता लगता था कि आपका पोर्टफोलियो क्या है. तो हमने by the way, I think, या हमने मिलके, but we were the first guys in India to start monthly disclosure of portfolio. Otherwise, even US में quarterly होता है. I think अभी भी quarterly होता है. But we all just to sort of try and compete with the PSU or state-owned company. I remember you betting on Z very big on this same thing, you know. तो Z में तो 100 times बना है. Z में तो बहुत ज्यादा बना है. On the basis that दूरदर्शन कोई नहीं देखेगा. उसी basis पे भारती लिया कि BSNL को खत्म कर देगा या whatever. And उसी basis पे ये HDFC बैंक वगैरह में बहुत पैसे बने. So that theme. From 95, I've been running with that theme, you can say. Yeah. And the biggest success in the long term has been HDFC Bank, but in the shortest period was
for the number one holding to be up 100 times. Yeah, but not that you're holding every stock, but you know, our fund went up 290% in 99. Wow. 290%. Wow. So, sir, if I may ask this, since you have a plethora of experience, what is one lesson you give your kids? So the lesson, if I mean, we don't give such formal lesson, but हर वक्त जो qualitatively चल रहा होता है, वो भी चल रहा है, which is related to पढ़ाई. Achha. That the real savior for anybody is education, not only to make money. आप क्या कहेंगे, हमें money नहीं बनाना, हमारे पिताजी ने बना लिया है. But the point is, even to hold your, you know, head high in front of others who are your age, your stage, little ahead, little behind. The only thing that will take you ahead in that sense is studies and more studies for young people, and then later on might be book reading, which may or may not be so true. But initially, otherwise you'll always feel uncomfortable in front of smarter kids, smarter colleagues, smarter, you know, everything. You have to hold your own. बिल्कुल सही बोले सर, बिल्कुल. So now, sir, I will, जब मैंने आपका personal, you know, I have tried to learn a lot about your personal side of the journey. Now I'll focus on the investment side of the journey, sir. Now again, आप बहुत टाइम से हो मार्केट में, you know, 1991 alliance जैसे आपने बोला है, before also, you know, you were there. How has the market changed? You know, because hilariously changed. बहुत ज़्यादा change हो गई है. उस वक्त क्या होता था that even the mechanics were crazy, that it would take you 1 month, 2 months, 3 months to get shares registered in your name. That जब हमारे को prices जो है screen पे, तो we used to have a PTI screen, उसमें वो ticker खाली चलता है, उसमें आप कोई रोक के कोई price नहीं देख सकते थे. It would go. So I met one broker who said, मैं कहा जी आप क्या पता, क्योंकि what a single broker would do one line of research. Okay, so what we did was, because initially we were trying to do a joint venture with UTI Alliance, that is. So actually I sat in the UTI office for 1 year, trying to get approval for a JV, which didn't happen. That's why Alliance started on its own. तो उसके बाद हमने कहा कि वो जो 10-15 UTI के हॉटलाइन ब्रोकर है ना, उन्हीं को हम अपना ब्रोकर बना लेते हैं, because there's no other way. कोई 1 रुपए की रिसर्च नहीं होती. So what was the research? The guy would call in the morning and say, Tata का ये भाव है, ग्वालियर का ये भाव है. ग्वालियर is Grasim, Tata is Tata Steel. So the telling you the price on the phone is the research, is the contribution. एक और आया, वो कहते हैं जी हम आपके कमरे में ना एक स्पीकर लगा देते हैं, so you will be able to hear the sound or noise or shor sharaba of the ring. So you are clued into the market. Wow. So that is the environment in which we have done, which we didn't do, because by the time we said अच्छा ये करे कि ना करे, I think some of these data streams started and जरूरत नहीं पड़ी. And then every evening you would get this bhav copy. I think every evening, yeah, it would come after 6-7 p.m. or whatever by that time. So you used to look at that and say, अच्छा ये price आज इधर ही होगी, stock की पता नहीं लगा मैं. Wow. Kind of thing. So in that environment, the real reason why so much money I made, I mean the fund made, like it was up some 10 times in 5-6 years, is because we got 3-4 things right. One is the tech, one is these private sector opening she types, and third is not to buy any of the old economy stocks उस वक्त के थे, which were JK Synthetic and some tire companies and all these chemical companies and these grant, वो जो सब होते थे उस वक्त के, लीडर को एक भी नहीं लिया. उस वक्त के अब लोग कहते हैं कि आप न्यू कंपनीज नहीं लेते. Everything we bought at that time was a new company kind of thing. And also tell me, sir, there was huge information, you know, mismatch, right? मतलब आज के टाइम पे और उस टाइम पे, क्योंकि वहां तो मुझे होता है, but मैं बता रहा हूँ कि उससे किसी की लाइफ को नहीं फर्क पड़ता. Simply because let us say we are holding at one time 30-40 stocks. आपको एक स्टॉक में इंफॉर्मेशन एडवांटेज, ये लोग जो बोलते हैं ना, आई ऑलवेज प्रोटेस्ट कि आपको इंफॉर्मेशन एडवांटेज हो गया, आपने एक स्टॉक छोड़ 40 स्टॉक दे रहे हो, उसको भी बेचते नहीं हो आसानी से, तो उस इंफॉर्मेशन का क्या हुआ? मैं तो यूएस के भी लिए बोलता हूँ. आई एम जस्ट नाउ रीडिंग, आई जस्ट फिनिश दिस बुक ऑफ व्हाट दिस गाइज नेम यार, ये जो बेचारा उसमें चला गया था, राजा रत्नम, गोल्डमैन, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए था. तो उसने भी बुक में लिखा है, व्हिच आई यूज्ड टू, आई मीन आर्ग्यू ऑन हिज बिहाफ विदाउट नोइंग द गाय, कि उसके कोई
10 साल में his fund went from 1 billion to 6-7 billion. He used to make 30% return per annum. उन्होंने उसको 2.5 साल रिकॉर्डिंग करी और उसमें उन्होंने 20-25 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट, उनको लगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग से वो उसका 7 बिलियन का मतलब है दैट लास्ट ईयर ही वुड हैव मेड 2 बिलियन प्रॉफिट with every trade being analyzed of his. They did not even get 20 million of profit, which they thought, which in the end also now he says was wrong, not right. The point is, ये सब कहानियां एक एक स्टॉक की कभी कभी किसी को मिलती होगी, but it is not the market as such, because market has too many things now. If you say that one guy got one differential information, maybe he did.Got it. But it will not take away from anybody who's done whatever he's done. But वो क्या होता है कि उस वक्त आपने रूल भी नहीं डिफाइन किए प्रॉपर्ली, पर उससे कोई, मेरा मतलब कहने का मतलब है उसे एक स्टॉक में हो सकता है कुछ हो गया, बट इट इज नॉट अ character of the market, Indian market or any market, because the markets are generally too much bigger than one guy knowing, and there are 40 stocks, not that every stock everybody knows something extra about it. So इसलिए I always defend the fund manager saying ये कहानियां बंद करोगी, ये इनको पता है, और उनको पता भी होगा तो एक स्टॉक और 2% वो भी उसने 10 साल के लिए रखना है, क्या लड्डू मिल गया उसको पता लगा के। आस्किंग यू वाज कि आपको लगता है कि सर जितने लोग, जो पुराने लोग जितने बड़े बन सके, आज भी कुछ लोग उतने बड़े बन सकते हैं, लाइक बिकॉज़ उस टाइम पे व्हेन यू गाइस स्टार्टेड इट वाज अ वेरी क्लोज्ड मार्केट, राइट? No, वो बड़े इसलिए बने हैं in terms of returns at least. Because the sectors were new. They went up 100 times. I had my listed stock going up 100 times. I've had at least 5-6 of them. They went up 100 times. अब आपके नहीं बन सकते क्योंकि प्राइवेट इक्विटी वाले आ गए। Exactly. Okay, so उसमें क्या होता है कि जो जैसे हमें जी जब मैंने लिया 10% of जी, उसकी मार्केट कैप ऑफ द कंपनी वाज $50 million. वाओ। ओके, और उस वक्त क्या होता था, एक थाई की कंपनी थी, केबल कंपनी, व्हिच वाज ओनली केबल, एंड इट हैड अ मार्केट कैप ऑफ 200 मिलियन। तो हमने कहा यार हमारी कंपनी तो साले पूरे इंडिया की बड़ी कंपनी बनेगी या बन रही है, और वो थाईलैंड की भी अभी बनी नहीं है, वो भी बनेगी, और वो खाली केबल थी, इसमें तो केबल था भी नहीं। आई बॉट 5% ऑफ कोटक आफ्टर यू नो कि इट इज गेटिंग अ बैंकिंग लाइसेंस इन 2002। $2.5 million खर्चे थे। अब वो आएगा नहीं ना, मतलब it won't be listed, it won't be available to you in that form. The company that will be available to you at those valuations, उसमें हजारों में से अगर एक चल गई तो चल गई, but those companies have been around for long and maybe deserve their only 50 million valuation. So this does not mean that buy small caps. उस वक्त के leaders were, और emerging leaders और emerging sectors के जो बड़े बड़े हीरो थे, उनकी मार्केट कैप बड़ी कम थी, तो इसलिए उस टाइप का नहीं बन सकता। तो मैं वही देखता हूँ सर, मैं लास्ट 12-15 साल से मैं वो 10 नाम वही देखता हूँ, आरजे सर, आरकेडी सर, आरडी सर, आप हुए, जो मैं बोलता हूँ लास्ट 5-10 साल में कोई नया पैदा हुआ ही नहीं, और इतना बड़ा वो नया पैदा हुआ ही नहीं। मैंने बोला उनके बच्चों के नाम भी नहीं सुनता मैं। उनके बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, को करने, वो कहते पिताजी ठीक है हमारे। नो, बट जनरली now actually if you see the scale of the fund managers is much bigger. उस वक्त करिए सर, I was the biggest fund manager, 1 billion मैनेज करते थे, biggest mutual fund manager of India. तो वो तो अब स्केल तो कितना हो गया, there must be 25 people, but they have not come out and shown that they are individuals or they are just part of a setup. I mean, a large organization or whatever. That is what is. But do you think, sir, now still in India there is a chance of becoming, because as you said private equity वाले आ गए हैं, मलाई को खा जाते हैं सारी की सारी। नहीं, by the way, I protest कि वो मलाई खाते हैं, क्योंकि उनके फ्लॉप भी बड़े होते हैं। बिकॉज अगर मैं कहूंगा वो मलाई खाते हैं, तो वो तो बोलेंगे देखो जी, पब्लिक मार्केट मैनेजर पब्लिकली बोल रहा है फोरम्स में कि पैसे तो हम बनाते हैं, इसलिए आप उनके फंड में ना डाल के हमारे फंड में डालो। तो इसलिए वो मैं बार बार अलग से स्ट्रेस करता हूँ कि वो हमारे कुछ स्टॉक्स में रिटर्न हमें नहीं लेने देते, उसके बदले वो अपने बड़ी नुकसान कराते हैं बाकी स्टॉक्स में, जो बताते नहीं हमें। That's true. So how do I understand Samir Arora's investment style? Is there a one line you can describe your investment style? So I would say flexible, which means people say, so for example, if you look at any global fund manager, equity manager, कोई होगा हमारा क्लासमेट कहीं पे, अब वो 40-50 कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है, या 30 कंट्रीज में, कोई 40 में पहुंचता नहीं होगा, 20-30 में। उसके बाद वो दूर से कभी एशिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर यूएस में कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। तो कई लोग तो हेज फंड मैनेजर बन जाते हैं, वो साथ में डेट में भी कर रहे हैं, फिर कमोडिटी में कर रहे हैं, फिर गोल्ड में कर रहे हैं। ये जैसे वो सोरोस के बंदे ले,
अब हमारे जैसे शरीफ आदमियों के पास आ जाओ, एक मार्केट करते हैं जो कि 0.9% ऑफ द वर्ल्ड है, उसके अंदर हम भी पढ़े लिखे हैं उनकी तरह, हम कहें हम ना जी उसमें से भी खाली 25 कंपनियां करते हैं क्योंकि हमारे को 28वीं कंपनी समझ नहीं आती, और इतने जोक करें क्या हम? So the point is, when we are already in such a micro part of the market, why can't we say, this is what we say, that we like growth companies because they are growing very well, and we like value companies because they are very cheap, and we like an unlocking play because it is getting unlocked, and we like a company which has nothing to do with unlocking because doing well. इसमें मतलब इसमें conflict क्या है? सही है. इट इज नॉट कि हमारा स्टाइल है, ये हमारा क्या स्टाइल है? हम तो थोड़े दिन पहले मोदी जेरोक्स में काम करते थे, उससे पहले आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियर थे. ये चीजें जो है, इट इज दैट, बट इन द बैक ऑफ द माइंड यू वांट अ, because in India this value unlocking doesn't work, this distress doesn't work according to me, or at least did not work for my most of my life, because we used to think who's going to fight with the promoter, who's going to go to the courts, and we were not talking about absolute distress, वो तो हमारे अब expertise से बाहर हो गया, but I meant generally a stock which is beaten up and you say I'm a large guy so I will make ruckus about it, वो सब नहीं हम करते. But this idea कि मैं 15% ROE से कम नहीं लूंगा, अगर 14.2 होगी तो क्या करोगे जी? तो क्या करोगे? क्योंकि नहीं लेंगे जब तक तो पहले 15 हो गया, आप जैसे बैठे रहो, जब तक आईसीआईसीआई बैंक 5 साल ठीक नहीं करेगा मैं नहीं खरीदूंगा. नहीं, ऐसे नहीं होता है. So the answer to that we put in our slide is early recognition of change. सही है. But recognition कईयों की हो जाती है, लेकिन लोग करते नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरी बनाई हुई है कि मैं ऐसे करता हूँ. अगर आप अपनी स्टोरी बना लो कि हम कुछ भी करते हैं, then there's nothing to defend. Got it. So I think that people should not slot themselves. सही है. If you slot yourself कि मैं ऐसे ही करता हूँ तो आप जोकोविच बन जाओगे. जोकोविच का पक्का दिल करता होगा कि अब मैं जाके टेनिस खेलूं, लेकिन उसने बोल दिया कि मैं तो जी उसके खिलाफ हूँ. अब बेचारा करे क्या? तो कहते नहीं नहीं अब मैं नहीं खेलूंगा, चाहे मैं विंबलडन गिव अप कर दूंगा. जैसे हमारा कोई फंड मैनेजर बोले मैं आईसीआईसीआई बैंक खरीदूंगा नहीं क्योंकि मेरे रूल के हिसाब से वो पहले 4 साल उसमें ऐसे होना चाहिए और मुझे पता है कि वो इम्प्रूव करे, मैं नहीं खरीद सकता. आपको पता है मैं इसकी बात कर रहा हूँ. तो ऐसी चीजें जो है, ओवर अपने आप को टाई अप मत करिए नॉट्स में बाय सेइंग आई डू ओनली दिस, समथिंग एल्स कैन आल्सो वर्क. I totally agree, sir. Be opportunistic, जितना हो सके, जहाँ पे दिख सके, value है. Thematically या in one concept you can say कि मोटा माटी you know what you want to do. But the market will always give you some other thing which you evaluate like a normal guy who knows finance and accounting and some market this thing and see if you like it or not. ले लो 2% क्या हो जाएगा. सही है. तो सर आपका what is your investment process? मतलब कई लोग होते हैं बोलते हैं जैसे आपने बोला स्क्रीनर चलाएंगे, स्क्रीनर चला के ROC, debt equity, cash flow, whatever XYZ चीजें निकालेंगे. वो सब होता है, लेकिन what I'm saying is, so now over the last 10, 12, 14 years we have changed it. In the sense पहले हम thematically हमें 3 themes पसंद थी, वो अभी भी 3 themes हम run करते हैं, which is competing with state. Second is middle class under penetration, because we don't want India under penetration. Because India under penetration में सबसे ज्यादा नुकसान हुए हैं by saying कि ये तो जी स्टील पर केजी पर बिलियन पीपल या कोई टीवी प्रोडक्शन पर बिलियन पीपल में सब में लगता है कि इंडोनेशिया से कम है, पाकिस्तान से कम है, श्रीलंका से कम है. तो वो समझ आ गई हमें 90s में कि इंडिया में बेचारे 200-300 मिलियन लोग हैं, बाकियों को तो इन्होंने इतना डिवाइड है इन आवर इनकम एंड इन आवर एबिलिटी टू दिस थिंग. सो हम कहते थे मिडिल क्लास में अंडर पेनिट्रेशन होगी तो हम लेंगे. उसी हमने पैंटलून लिया उन दिनों में, और ये ट्रैवल वाली चीज सब लेते थे उन दिनों की, जो भी ब्रांडेड ये वो जो भी की भाई 300 मिलियन 253 है वो जो भी आप नंबर बोलो अंडर पेनिट्रेटेड. और थर्ड हम लेते थे आईटी फार्मा. पहले आईटी से शुरू हुआ था, फिर आईटी फार्मा, फिर आप वो स्पेशलिटी केमिकल जोड़ दिया. लेकिन अब स्टाइल चेंज कर दिया. अब स्टाइल चेंज किया है कि द कॉस्ट ऑफ एरर इज वेरी हाई समटाइम्स, and so the best thing is, and also it is very difficult to say what is good. For example, I bought अपना कोटक in 2003. अब मुझे क्या पता कि वो मैनेजमेंट अच्छी है कि गंदी है. The bank has not even got a license yet. Or let's say some other bank or some other Z. How do I know it has good management? All I know is कि दूरदर्शन के साथ मुकाबले में he will win. But you can say he does not have that time. There is no incident that we know which says that it is bad management.
but we don't know what is good management, because even till today we don't know what is good management, only we know what is bad management. So इसलिए ओवर टाइम हमने कहा है कि हमने कुछ 8 फैक्टर बनाए हैं कि उसमें बैड नहीं होना चाहिए पहले तो किसी चीज, वो है कि नहीं, पहले तो थीम में बैड नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्री बैड नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में आजकल हम इंफ्रा को बैड गिनते हैं, मोस्ट ऑफ इंफ्रा को, कि जिसमें गवर्नमेंट इज द कस्टमर, हमें नहीं लेना. बहुत कंपनियां हमारे देश में चलने के लिए, आप कहते हो को ऑर्डर मिल गया, हमें नहीं लेना, सॉर्ट ऑफ. ओके, सो दैट आल्सो इज अ लेसन दैट यू गेट ओवर टाइम, दैट डज नॉट मैटर, because as we say now, which we did not appreciate in the early days of Alliance, a large number of companies do well each year because there are a large number of companies in the market. So once you accept that, आपका स्टाइल चेंज हो जाता है. जो मेरा कोई 15, 16, 18 साल पहले चेंज हुआ, पहले 5-10 साल में मुझे भी नहीं पता था या इस तरीके से. Which is, if there are 500 companies in the index, it can never arithmetically be the case 20 companies do better than the index and 480 do worse than the index, because index is an average of these 500 companies. सही है. Weighted by market cap होगा, क्योंकि market cap है, but so broadly that level lies somewhere in the 250 के आसपास ही होता है. आधी इंडेक्स से बेटर करती है, आधे इंडेक्स से वर्स करती है, मोटा माटी. सो अगर आधी बेटर करती है, तो इन थियोरी, because our job is to beat the market, because nobody else beats the market consistently या over time. So that means actually, if you could only say ये top half में है कि bottom half में है, based on whatever factors you want, it is massive value add, because 240th company is beating the market. सही है. If we say we are in the top, suppose हमारे सारे stocks top half के, हमें खाली इतना पता लग जाए कि ऊपर वाले आते हैं कि नीचे वाले आते हैं, समझा. तो ऊपर वाले आधे में 240th stock is also beating the market, या 249th. आपका अगर सारे स्टॉक्स ठीक खाली स्लॉट में आ गए, तो जरूरत है कि सारे 249 का रिटर्न देंगे, कोई 200 का रिटर्न होगा, कोई 180th होगा, उनका रिटर्न तो सो मच डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट. सो एक्चुअली द जॉब इज एक्चुअली दिस, इधर ही इधर. तो आप बोल रहे हो बाकी, if I can understand correctly, ये अरिथमेटिक है. If you want I can show you the slide. I agree, I totally agree. Arithmetic. हाँ, you're saying कि किसी को आगे का पता ही नहीं है, आगे नहीं. आगे का आपको ये आगे का पता लगा के ये पता लगेगा कि ऊपर में है कि नीचे में है, बेस्ड ऑन सेक्टर कैसा है, उसकी हिस्ट्री कैसी है. लेकिन आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये अगले साल की बेस्ट कंपनी निकलेगी, क्योंकि बेस्ट कंपनी जो निकल गया आपको कभी नहीं पता लगना. आई हैव बॉट बजाज फाइनेंस इन 2011, उनका 2008 इतना खराब था, कैसे पता लगेगा. हमने आइशर लिया 2009 में, कैसे पता लगेगा. कोटक लिया 2009 में, कैसे पता लगेगा. जी लिया 98 में, कैसे. एचडीएफसी बैंक लिया 90, कैसे पता लगेगा. आपको, हमें ये पता है गंदा नहीं है और बाकी चीजें ठीक है. सो फोकस ऑन नॉट बाइंग अ बैड कंपनी. नो, बैड कंपनी का भी एक डेफिनेशन हमने ब्रेक किया ना, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाट इज बैड कंपनी. सो वी से कि एक तो इंडस्ट्री बैड नहीं होनी चाहिए. व्हाट इज बैड इंडस्ट्री is, ये आजकल के हिसाब से होगी इंफ्रा, it could be anything which you feel is getting disrupted. For us even today, two-wheeler. Now the point is, somebody will say कि नहीं वो गिर गया है और अब वो इस साल उसका नंबर आना है, suppose. इनको क्या सकता है ना logically. हम कहते हैं doesn't matter, because we have separately understood that some 200 companies or 150 companies are going to do very well. So this one of them might be this thing which we don't like otherwise. Doesn't matter. We have 138 other companies to worry about. Got it. तो आपको easily reject करने के लिए पहले ये accept करना पड़ेगा कि बहुत सारी कंपनियां अच्छी करती हैं. Don't worry. आपने नहीं ली तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. ये नहीं होगा कि वो ये कंपनी ने बढ़ना था पूरी लाइफ. So हमने वो 8 फैक्टर्स को डिफाइन कर दिया. इंडस्ट्री, थीम, अब नया एक जोड़ा है डिसरप्शन, पहले नहीं था. फिर उसके बाद हो गया हिस्ट्री, उसके बाद फाइनेंशियल पुरानी अकाउंटिंग, और फिर है फ्यूचर का प्रोजेक्शन ऑन रिजल्ट्स वगैरह एंड वैल्यूएशन, गॉट इट, और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब इसमें क्या है, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें नहीं पता, लेकिन हमें 10-15 गंदी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पता है हमारी मार्केट में, तो वो हमने आउट कर दी. हमें 15-20 पता है जहाँ अकाउंटिंग खराब है. ये नहीं पता कि हमें 480 कंपनियों में अकाउंटिंग खराब है. ये ड्रामा कि मैं वो वाली कंपनी लूंगा जिसमें अकाउंटिंग अच्छी है. अब भारतीय की अकाउंटिंग अच्छी है कि गंदी है? गंदी नहीं है, अच्छी है. हमें क्या पता, हमें क्या पता अच्छी है उसकी. Because in all these companies, I will tell you one line. I can tell you corporate governance. What corporate governance of
भारती did a joint venture with Walmart. उसने शेयर हमारे को क्यों नहीं दी, अपने आप क्यों रख लिए? उसने तो भारती के शेयर से वो डील करी होगी ना कि आई एम अ बिग टेलीकॉम. ऐसे सुना होता है, ऐसे हर चीज में मैं ढूंढ सकता हूँ. आई मेड अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस वन. You tell me any company, I'll tell you how bad the corporate governance is. It actually is not bad. That is life. Got it. So we are only saying bad को हटाओ भाई. सही है. On any of these factors. And then remember कि बड़ी सारी कंपनियों ने अच्छा करना है. अगर बड़ी सारी कंपनियों ने अच्छा करना है, आपकी भी आ जाएगी घूम के. उसके बाद पॉजिटिव ढूंढो इनमें. Got it. नहीं, I understood, sir. Very well. So this has changed, right? Because since you started. So this has changed. In first 5-6 years of Alliance, maybe we were doing themes and then trying to buy stocks which fitted these 3 themes only. But in trying to buy that time, actually I have done the same thing without formalizing it, because I must have said at that time, I buy good management. How the hell did I know it was good management? Because it was a new management. Does Dixon have good management? No idea. We own it. We say it doesn't have bad management, but it has many other good things. It has good future listing, or what you call trigger, with policy driven, whatever driven, environment, China +1, ye wo. But do you know accounting is good or bad? We have not found anything bad. Should we call it good therefore because of that? Good is a very different thing. It's like saying, which I use in all my marketing, an employee. How do you call what? Okay, tell me whether an employee is good or not. Tell me, how will you say an employee is good? बताओ आप. सही है, बाकी ठीक है. हम कहते हैं employee steals money, he's bad. Employee doesn't steal money, doesn't mean anything. He's not supposed to steal money, right? So let us say same thing with the management. Oh, he doesn't have very cross conflict. So you're not supposed to have. यार इसमें क्या हो गया? So you say an employee works hard and delivers on what he's supposed to deliver. Is he good? We don't know. Maybe harasses women. But if he doesn't do it, he's bad. Doesn't matter whether he harasses women or not. Very important. Bad is very fast. Good is no end. I agree, totally agree. So does your framework applies to mid cap and small cap companies also? Because उसमें तो बहुत चीजें होंगी जो शायद आपको perfect दिखेंगी नहीं. नहीं, perfect ढूंढ ही नहीं रहे ना. वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ. हम bad नहीं चाहिए. हम good नहीं ढूंढ रहे हैं. Good हम ढूंढेंगे. मतलब इन 8 फैक्टर में ना 5-6 फैक्टर गुड होंगे. कोई मोस्टली वैल्यूएशन का हो सकता है गुड, ट्रिगर हो सकता है गुड, क्या कहते हैं, इंडस्ट्री हो सकती है गुड. लेकिन हम मैनेजमेंट को गुड कैसे बोले अगर वो 2 साल से कंपनी चला रहा है? हमें क्या पता मैनेजमेंट इज गुड, बट वी हैव नॉट फाउंड एनीथिंग, और वी हैव नॉट रेड एनीथिंग, और वी हैव नॉट फाउंड एनीथिंग ऑन गूगल, और वी हैव नॉट फाउंड एनीथिंग व्हिच सेज कि बैड है बेचारा. So can you मतलब you will never look at Idea, Yes Bank, CG Power kind of story? No, Yes Bank now is under a new management. Acha. Yeah, but I will not look now. Previously, I would do a trade-off. Now I will. Yes, in the last 10 to, yeah, I will not. I'm saying these companies जो भी है, they will never come into these frameworks. Yeah, unless they have a change. नहीं, अब क्या होता है? Yes Bank change ही हो गई, तो theoretically we can't say कि we will never look. अब तो new management के अंदर है. Of course, but now for some other reason you may not buy it. I'm just saying, but turnaround stories you will not look. Like no, turnaround गलत बात आप कह रहे हो. Turnaround अगर loss का turnaround हो गया उसमें क्या गलत है? Idea में क्या कौन सा management का हमने कोई चोर थोड़ा ढूंढा कोई उसमें. तो ऐसे नहीं है. In theory, Idea has not, on these 8 factors, if it is bad, it may be bad because of a competitive situation or a legal situation or a government whatever regime. तो उसमें तो आप ठीक होगा तो अभी आप बात करोगे. लेकिन उसमें अभी तो कह रहे हैं कि उससे कुछ चोरी करके ले गया कोई पैसे, तो इसलिए that one will not be rejected from that angle. It may be rejected from industry angle. 100%. Or it may be rejected from financial angle. 100%. So financial. If I think about it, say आपको कोई नया स्टॉक ढूंढना है इन्वेस्ट करने के लिए, how do you go about it? मतलब आप अपनी थीम सोचते हो, फिर कंपनी पे आते हो. हमने इसी हफ्ते लिए 2 स्टॉक, आज भी लिया एक. So how do you do it? So the do it का क्या होता है? पहली बात तो ये है कि आपका डेटा बताती है, स्क्रीनिंग होती है पहले, या मैनेजमेंट. पहली बात तो ये है कि बेचारे मैं अकेला थोड़ा काम कर रहा हूँ यार, 5 बंदे काम कर रहे हैं, नंबर 1. सेकेंडली आज ही 3 कॉन्फ्रेंस चल रही है. एक IIFL की चल रही है, एक एक्सिस बैंक की चल रही है, कोटक की चल रही है. तो उसमें वो 4 और 5 हम सारे कुछ सुन रहे होते हैं. सेकेंडली वी आर नॉट लुकिंग to invest from zero a portfolio. तो हमारे पास पहले 100 में से 98 invested है. तो अब आप खाली देख रहे हो कि अब नया क्या किया जाए. तो हमारे हिसाब से नया हमें लगा that the opening up
of this post Omicron will be very, very violently vicious and in travel. Because मैं अभी 4 महीने travel करके आया हूँ, तो I've seen कि कितना desperate थे हम travel करने के. तो अब वो करके और उधर से कोई 5 में से एक बंदे ने एक लगाया होगा कि जी मेरा ये होटल ले लो या मेरा ये ले लो, और वो हमारे करंट थिंकिंग के हिसाब से और हमारे 8 फैक्टर्स जो है उसमें किसी में नेगेटिव नहीं है और 4-5 में बड़ा पॉजिटिव है, बिकॉज द शॉर्टर टर्म ट्रिगर्स आर वेरी पॉजिटिव. Longer term, there is nothing wrong in the history. The stock has valuation is what it was 2-3 years ago. So whatever करके अपने का 2% ले लो. So the point is, because these guys are doing research on these stocks anyway, it is just that we never bought them before. So one guy in the US told me, oh, one of our fund managers, he said that he was looking at that stock for 15 years before he bought it. तो मैंने यार ऐसे मुझे खुद आ जाती है, मैं करूँ क्या? ब्लडी पंजाबी. मैंने कहा भाई इंग्लिश में बोलना पड़ता है. दैट जो भी स्टॉक मैं खरीदता हूँ 95% वो मैं 96 से 94 से देख रहा हूँ. Whether I may have bought it also previously, but any stock, because the stock has been listed for 25 years, I have been managing that or investing in India for 25 years. Therefore, by definition, that company, unless it was some completely goofball company, I have been following for 25 years. So what you are saying is, if somebody starting from scratch, अब मेरे को ऐसे होता है, आपके पास 90-95% आप इन्वेस्टेड हो, आप on the margin ढूंढ रहे हो, and that you have certain things that you believe in. Like we don't believe in PSU banks. मुझे पता है आप लोग बड़े पुश करते हो. मेरे को तो आप पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताओ. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी बड़ी होल्डिंग है, दूसरी होल्डिंग के पास, दूसरी बैंक के पास कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है, कुछ है? एक के पास नहीं है. मैंने चेक किया है. और ये कैसे हमारी कंट्री के फ्यूचर स्टॉक्स हो सकते हैं न्यू मिलेनियम के लिए, जहाँ कोई ऐप नहीं है, कोई वेबसाइट है, वो बड़ी ऑर्डिनरी, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है. तो एनीवे, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, सो सर्टेन थिंग्स बिकॉज ऑफ आवर these 6 फैक्टर्स, कि जी हमें ये वाले सेक्टर्स नहीं पसंद, ये वाले हमें थीम्स नहीं पसंद. हमें फॉर एग्जांपल एक और थीम नहीं पसंद, which is the theme of Tata Motor, which is the theme is it is not an Indian company. It is a company owned by Indians. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि चाइना में उसकी 4,000 हो गई कि 4,500 हो गई, क्योंकि अगले हफ्ते महीने मुझे नहीं पता कि 4.5 से 4 हो जाएगी. मुझे नहीं इंटरेस्ट है कि जर्मनी में वो BMW ने कितने पैसे लगा दिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, या यूके पाउंड का डॉलर का क्या हो गया, या वो ब्रसल्स में कोई ग्रीन पॉलिसी आ गई पोल्यूशन के ऊपर. हमें नहीं करना वो काम. अब आप जो मर्जी कर लो, तो हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कहते हैं नॉट टू वरी, 100 stocks have to do well. Whether you do well or not, 99 और है मेरे पास ढूंढने को. सही. और लेने तो मैंने 30-40 है. So there is still a big universe of what in theory would do well, but I am not buying that. So what happens when there is a small cap stock? So you just ignore them? because जो छोटे unheard stocks होते हैं जो बड़े लोग लेते हैं. हमारे पास बड़े unheard stocks हैं. तो वो हमारे पास वो है वेस्ट लाइफ, मोस्टली अनहर्ड, ये कुछ चलता ही नहीं है. मैकडोनल्ड इंडिया, हमारे पास लेमन ट्री है जो हमने आज भी लिया है. ऐसे बड़े स्टॉक होते हैं, स्मॉल कैप भी गिने जाएंगे ना ये सब. इससे स्मॉल कैसे होगा? इससे स्मॉल तो आप लोगे नहीं, क्योंकि वो फिर वो वेटेज थोड़ी तो होनी चाहिए ना. होते हैं स्मॉल कैप की क्या बात है. सर मुझे ये बताओ ना, कई बार क्या होता है, जो बड़े अच्छे स्मार्ट लोग आप जैसे होते हैं, कभी कभी कोई ना कोई गलती हो जाती है, कभी लास्ट में 10-15 साल में. व्हाट इज द रीजन फॉर इट? होता है ना कि यार मालूम है कि हाँ भी कुछ होने वाला नहीं है, बट फिर हर 4-5 साल में एक स्टॉक हमारा जीरो जाता है. जीरो मीन नॉट जीरो, बट लाइक 40-50% डाउन. तो वो तो अगर मैं शुरू से करूं, तो सबसे पहले मेरा गया था मोदी लुफ्ट. बट द थिंग इज, मैं स्टॉक कम लेता हूँ ना, तो मेरे पास था 1% ऑफ पोर्टफोलियो. एंड JP Morgan fund, which was at that time called Jardine Fleming, owned 10% of the fund in Modi Luft and 24% of the company, I think they owned. Wow. Okay. उसके बाद मेरा जीरो हुआ वाटर बेस. 80 रुपीज में हमने लिया था और 3 रुपए में था. आई थिंक कुछ आ गया था, कुछ जो भी बीमारी आ गई थी उनको. उसके बाद हुआ था, मैंने प्राइवेट स्टॉक लिया था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. उसके बाद लास्ट 6-7 सालों में एक हुआ आर्शिया, और कोई इतना नहीं हुआ. So the point is that you should, I'll tell you, first is you should not at the end of the year remember कि एक स्टॉक उड़ गया था.
Zero का मतलब 50-60% down. ABCL we could not get out because it was unlisted, but बाकियों में we must have got out at 60-70% down or whatever. So the thing is, the lesson that we have learned at various times, I don't know about various lessons, but the last lesson we have learned this time, thankfully, not only from owning, but also by seeing, is that we are not going into an infra related to the government. Because all these stocks, which I did not have, GMR, GVK, Lanco, Reliance Infra, और दो चार और ले लो, जो भी ले लो, पता नहीं कितने सारे, ये HCC, कोई भी ले लो, all were actually, not all of them were some scam हो गया, बड़ा fraud हो गया. They delivered on their building, on their road, on their power plant. किसी में गैस नहीं मिली, किसी में रोड नहीं मिली, किसी में अप्रूवल नहीं मिली, सारे बंद हो गए. अब कोई बोले कि अब चेंज हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, क्या जरूरत क्या है? 100 other stocks. But it's always the formula. 100 other stocks are going to do well. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. Sir, how much importance you give to meeting the management? No, meeting the management, I want to meet, but I don't want to be their friend. Okay. Just to tell you, bro, in 25 years, I would have not had dinner with a corporate maybe even once in my life. Seriously? Yeah. But sometimes पहले मैं ग्रुप में करता था, अब मैं वो भी नहीं करता. कोई जरूरत ही नहीं होती है. फालतू में ऐसे लगता है कि हम बड़े क्लोज हो गए, क्योंकि क्या होता है, बेचने वक्त मुझे किसी की बात नहीं सुननी है. सही है. मुझे किसी की बात नहीं सुननी है कि कोई सोचे कि आई कैन से. तो पहले अलायंस के टाइम में फोन आते थे कि आपने शेयर बेच दिए, तो मैं कहता था ये जी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने एनालिस्ट रख लिए हमने, वो एनालिस्ट ने 1 से 2 रेटिंग कर दी. अब मैं क्या करूं? चलो मैं बात करता हूँ एनालिस्ट से, कहो क्या बेचारे को, क्या मतलब शेयर बेच रहे हैं. इसके बाद तो हम और बेशरम हो गए. तो हमारे को लगता था कि हम बड़े क्लोज हैं मैनेजमेंट के, इन द सेंस कि वी नो देम फॉर लॉन्ग. उनके शेयर शॉर्ट भी करते हैं, तो इसलिए हम वी वांट टू बी बेशरम. Meeting a management, otherwise, yeah, I don't mind meeting. You should meet or do Zoom call or whatever. हमें रोज हम करते हैं ग्रुप मीटिंग्स जो हो रही हैं कॉन्फ्रेंस, वो तो चलिए नहीं, वो तो जब होंगे फिजिकली जाके करेंगे, वो तो है ही. So how do you deal with some of the unknowns, sir? ये जो unknowns आजकल तो बहुत होने लगे हैं मार्केट में. ये वॉर हो जाएगा, या इंटरेस्ट रेट्स का ये हो जाएगा, या ब्ला इंटरेस्ट से अननोन, इस टाइप के अननोन का बहुत ज्यादा आप वो नहीं कर सकते हो. So what you call, नहीं, इंटरेस्ट रेट का अलग है. I'm talking the war, because war type का क्या, you have no way of knowing, and it is low probability, generally high impact. So I'll tell you a story quickly if you have time. So when I was in Alliance, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की नेली लड़ाई होने वाली थी. I think it was called Operation Brass Tacks or something. इसमें वो जब अटैक ऑन पार्लियामेंट हुआ था in December of 2001 maybe. So उसके बाद अलायंस में हम अपने रोड शोज करते थे, तो एक बंदा कहता है कि अब ये इंडिया पाकिस्तान वॉर ना हो जाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा जी, you don't know whether war will happen or not, but there is only one fund house in India which is prepared for this war, which is Alliance Capital, because their fund manager does not even live in India. He lives in Singapore. पॉइंट इज, ऐसे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता. वॉर हो जाएगी, न्यूक्लियर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया हो जाएगा, हमें नहीं पता भैया ये सब बातें. बट आई यूज्ड टू टेल देम, इफ देयर इज अ वॉर, आई कैन अश्योर यू that your investment in an alliance fund will be the least of your problems. और फिर मैं उनको बोलता था कि तुम हमारे फंड से रिडीम करके क्या वॉर के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे? तुमने कोई ब्लैक पेपर खरीदा है अपने विंडो को लगाने के लिए जब बॉम्बिंग होती है? तुमने कोई एक्स्ट्रा राशन खरीदा है दबाने के लिए? खाली हमारे फंड से रिडीम करके कहो जी इंडिया पाकिस्तान वॉर ना हो जाए. और तुमने क्या किया भाई? तुमने कहीं दिल्ली से तुम चेन्नई चले गए हो कि दिल्ली इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान? कुछ नहीं, हमारे फंड से रिडीम करके क्या मिलेगा? ऐसे कोई नहीं करता था. अब आ जाओ इंटरेस्ट रेट पे. वो एक्चुअली वी आर सपोज्ड टू नो हैव यू, दैट इज लॉजिकल थिंग. तो उसमें हमने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा चेंज किया. Got it. Because we think that the US market will be under sort of pressure. And how do you manage to cut the noise in the market, sir? आप हमेशा cool होते हो. एक होता है ना, अभी तो इतना bombardment हो गया है noise का, अभी सब एनालिस्ट बन गए हैं.
ट्विटर वो का बात तो है service बन गया है। एक्चुअली अब क्या हो गया कि एक्चुअली वन वे देयर इज एन एडवांटेज, दैट एडवांटेज इज दैट नोबडी हैज एनी एक्स्ट्रा दिस थिंग कि इंफॉर्मेशन को इतनी ज्यादा कॉन्फ्रेंस कॉल, वेबसाइट, ट्विटर पे और ब्लूमबर्ग एंड एवरीथिंग। सो इसलिए हमने अपना हीलियोस का वो बनाया है, वेल्थ थ्रू विजडम, not through information. Because actually, if you look at it, information has zero value. I'll tell you how. So let us say a result of a company is about to come. हाँ, Okay. So there is massive trading in the stock, and somebody can justify it by saying कि जो बेच रहा था उसको लगता था रिजल्ट गंदा आएगा, और जो खरीद रहा था उसको लगता था ये बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, उसको तो इनसाइड न्यूज पता है, ये वो है, उसने खरीद लिया. बट दैट इज व्हाई द ट्रेडिंग प्री द रिजल्ट इज वेरी हाई. Now the result comes. Now everybody in the market knows what the result is. Trading उससे ज्यादा हो जाती है. सही है। अब क्यों हो जाती है? अब आप सबको तो पता था कि भाई ये रिजल्ट है, अब सब इक्वल हो गए. नहीं, अब जिसके जो बेचेगा वो कहेगा ये लास्ट टाइम है, दिस वाज द पीक ऑफ दिस गुड रिजल्ट. एक बोलेगा ये डिस्काउंटेड था, एक कुछ और बोलेगा. मेरा मतलब है फिर ट्रेडिंग शुरू कर दोगे with now everybody having on paper the same information but different view. सही है। तो इसलिए ये सब चीजों में, इन चीजों के लिए थोड़े आपके पास वो होने चाहिए थंब रूल. तो हमने वो थंब रूल बनाए हुए हैं ना कि हम when do we sell a stock, which you haven't asked, and these kind of stocks that we own, they are not changing. Like we are holding stocks at least with a 3-4 year kind of average holding Okay. on the long side. You know, I remember, sir, you putting a lot of emphasis on just having a common sense, you know, when it comes to all this news and everything. I remember, I think we met in Goa और जब वो येस बैंक का कुछ चला था, वो कोई सरदार था, कनाडा वाला था. अब वो बताओ, हाँ. तो मैं बोलता था कि वो सरदार जी जो है वो इंडिया कितना डालना चाहता था, 1 बिलियन आई थिंक, Something like that. 1 बिलियन. तो मैंने कहा कि आदमी इंडिया में 1 बिलियन डालेगा तो उसकी अपनी नेटवर्थ 4-5 बिलियन तो होनी चाहिए ना. तो 1 बिलियन की नेटवर्थ वाला तो 1 बिलियन डालेगा. सो हमने कहा पहले तो उसकी फोर्ब्स में लिस्ट में नाम नहीं आया कि भाई 4 बिलियन का कुछ घूम रहा है. सेकंड बात है, जो आदमी इंडिया में अकेला आदमी 1 बिलियन डालेगा, वो पक्का उससे 3 महीने पहले यहाँ पे आके सारे मिनिस्टर्स को मिल रहा है, मोदी जी को मिल रहा है, वो जाके अपनी कोई बैंकर्स को मिल रहा है. तो हम जब गूगल में सर्च करते थे, उसकी खाली एक न्यूज होती थी, ही इज बिडिंग फॉर यस बैंक. इट वाज नो प्रायर न्यूज. तो ये तो कह रहा हूँ, ऐसे मैं आपको 10 एग्जांपल दे सकता हूँ, 100 एग्जांपल दे सकता हूँ कि इट इज सो ऑब्वियस. फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस स्टोरी कि कोटक इज टेकिंग ओवर एक्सिस बैंक, और कोटक इज टेकिंग ओवर एक्सिस बैंक होती थी 4-5 साल पहले या 3 साल. तो आज 3 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी. आज 3 बजे ना कोटक विल अनाउंस. याद है? ओ सब एक्चुअली सब कर्नाटका बैंक हुआ, कर्नाटका में आईसीआईसीआई बैंक इज टेकिंग ओवर. दे आर अनाउंसिंग टुडे. मैं कहा अनाउंसिंग, दूसरे बंदे से पूछेंगे भी तो सही कि अपने आप अनाउंस कर देंगे. सही है. और उसका क्या फ्री में पब्लिसिटी हुआ था सर? क्या फ्री में पब्लिसिटी हुआ था? अच्छा, बाय द वे, यू नो वी वर शॉट Satyam when the scam broke. So I had gone on TV and spoken to them, and I said कि इसमें कुछ गलत है, but I didn't know कि ये ऐसा scam होगा. But the story was 15 days ago they had announced that merger with Metas. Okay, so Metas का merger फिर मार्केट गिर गई यूएस में, तो वो अगले दिन सुबह कैंसिल हो गया. तो उसके बाद वो स्टोरी खत्म हो गई. उसके 3-4 दिन बाद, well before the scam broke, 3 independent directors resigned on the same day. Now imagine these FII who finally sued Satyam. He himself came on TV, which is, I won't tell you the name, Singapore. वो जाके बोलते हैं, it is good that the independent directors have resigned because they were pushing a bad deal. They were pushing a bad deal तो promoter की थी. So the fact that 3 independent directors resigned after the bad deal was cancelled. तो मैंने कहा यार ये किस टाइप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? वो कहते हैं अगर ये गंदी डील आपने नहीं एक्सेप्ट किया, रिजाइन कर रहे हैं. कॉमन सेंस. Some of it is common sense. फिर वो कभी चल जाती है, कभी नहीं चलती है, but that is how it is. And important question, sir. अच्छा, वो आपने भी याद करा दिया मुझे. How do you decide to sell a stock? So we have made it into 2 groups. One is a group where we are buying what we say are already well-known stocks, which we call buying high confidence in reasonable return stocks. That means the stock is already well-known. So we are not discovering that stock, we are choosing that stock. That means today if somebody buys HDFC Bank or TCS, he is not
discovering it today. अब तो choose कर रहे हो ना from a universe of 50-60 large names. तो हमारे पास 10 नेम होंगे ऐसे, जैसे भारती कह लो या HDFC बैंक या TCS, तो इन स्टॉक्स में you bought them at a certain point in time. Let us even assume we had it from ever, doesn't matter, but philosophically you bought it say 5 years ago, and you are at best expecting that you get the earnings of these companies. So yeah, because the stock is anyway well known. So if over a number of periods, could be quarters or years, the returns from the stock are much higher than the earnings growth, we obviously will be happy in the beginning, but over time we will slowly sell it and then sell it to zero. जैसे हमने बहुत स्टॉक्स के साथ किया है जिसमें earnings growth of a well-known stock are 10-15% and year after year the stock is going at 25-30% up, जो पहले से भी well-known था, ये नहीं है कि. And then we have this second group where we are saying we are either early or we are buying it in a bad time or we are buying it जब वहां पे कुछ गुफअप हो गया, लेकिन हमारे को अपने 8 फैक्टर्स के हिसाब से कोई गलत नहीं है और कुछ में बड़ा अच्छा है और किसी में गलत नहीं है. बट जैसे कोविड टाइम में हमने इंडियन होटल लिया था, हमने कोविड टाइम में जब वो 70-75% डाउन हो गया था, इंडसइंड बैंक लिया था, यार इतना गंदा नहीं है. तो उसमें यू इफ इट रिबाउंड्स, it will not rebound with earning, it will rebound with your discovery, confidence, whatever. So usme you will let it go more because that is the whole purpose of buying it. तो हमारा गोल होता है उसमें 25 बनने चाहिए और पहले वाले में 18-17 बनने चाहिए, because 14-15 मार्केट बढ़ेगी, वो 3-4% बढ़ेगा ज्यादा फर्स्ट इन theory. Now whether it makes or not. So my last question, sir, on the investment journey of yours, there's a huge debate जो आजकल चलती है, growth versus value. You know, ये आपका perspective है इस पे. So that's why I was saying that over time, first of all, I have never been so much into one versus the other. For example, our top holding is ICICI Bank and number 2 State Bank. Now you can say कि वो तो वैसे बेचारे value है. But if you are going to call value as me buying ONGC and some power company, I am not buying it. I will not buy those things. So if you say value is कि आपने बड़े high PE को थोड़ा कम कर दिया है, पहले बात हम valuation के against जाते नहीं है, except a stock that we already own and which is outperforming every day, हम उसको खींचते हैं. अभी हमारा एक स्टॉक है टाइटन, वो इतना हाई वैल्यूएशन है लेकिन वो रिटर्न भी देता है, तो हमें क्या ऑब्जेक्शन है. बट अगर वो नहीं होता हमारे पास डिफरेंट गेम, यू नो, वी वुड नॉट स्टार्ट विद सच अ. But of course, if a company is growing at 30-40%, it's a very different game than a company growing at 10-15% and having that. So anyway, so bottom line is that on the margin, I would also like to, like I bought this 10 stock, whatever, with P को छोड़ो, but otherwise value गिनते हैं क्योंकि stock चला नहीं है 3-4 साल से, 3-4 साल पुरानी prices पर है, kind of thing. So on that margin, I agree. But India में क्या है कि 3 sector अगर हम ले financials, उसमें कोई बहुत re-rating नहीं हुई है. सही है. Re-rating नहीं हुई है. That means other than maybe ICICI and State Bank only, which we both have, I mean, have both of those because हमने time पे लिए. But otherwise कोई बहुत re-rating नहीं हुई है. Earning growth से कम ही stock चले हैं 4-5 साल. फिर आप ले लो IT में re-rating हुई है, लेकिन उनका position change हो गई है कि इस समय world में technology spend is too high and their growth rates also have been higher than that. But and also they have not become 50-50. वो 30-35 वाले हैं, 28-30 वाले. और तीसरा कंज्यूमर, तो कंज्यूमर में जो बहुत री रेटिंग हुई है वो तो हमारे पास हमने सारे निकाल दिए, फ्रॉम डीमार्ट टू दिस टू दैट. इसमें हाई रेटिंग और हाई वो नहीं हमें चाहिए. सही है. Got it. तो सर, thank you so much for this investment journey of yours. I will take last 2 minutes और एक छोटा सा rapid fire round है सर, छोटा सा rapid fire round है. I'll request you restrict your answer to one word or one line, okay? One word, okay. One word तो मुझसे बोला नहीं जाता, but let me try. Actually वो सही बात है आपकी. So if not an investor, you know, who would you like to be? Script writer. सही है. मुझे लगा कि आप कपिल शर्मा बन बोलोगे. नहीं, मैं अभी भी I'm reading a book on script writing. Just now मेरे पास है. So given a chance, okay, to go into the past, would you like to change anything? I would like to change my dad's death because, you know, just when we went to water, he had, you know, government service and all the mushkil se hum pahunche, but before even it started,
1 month before he passed away, he didn't see anything of my success. He only got me to the starting point. That would be. I'm very sorry, sir. I'm very sorry. Best corporate, sir, you admire the most in mid cap space, because large cap का तो आपको पता है सबको, you know, but in mid cap आपको लगे यार बॉस स्टॉक का छोड़, but ये बंदा बहुत अच्छा है. वो उस हिसाब से मुझे वेस्टलाइन पसंद है, इसलिए वो चलता नहीं है, पर मेरे पास है बड़े सालों से. अच्छा, जाती है. बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट भी पसंद है, द फोकस भी पसंद है, and valuation भी पसंद है, and management has done a good job. Got it, got it. A company, sir, you regret not owning? Not owning. Actually, mostly at some stage or the other, we have mostly bought. It is just that sometimes we have been late. कौन से स्टॉक अच्छे चले मुझे नाम बताओ ना, फिर मैं बताऊंगा जो मेरे पास नहीं, ऐसे बहुत होंगे यार, वो मैं ट्विटर पे आपको आंसर दूंगा. चलो, लेट मी सी. नहीं मतलब बजाज फाइनेंस हुआ ऐसा कुछ? बजाज फाइनेंस हमने 2011 से लिया था. अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा कुछ स्टॉक जो आपने नहीं लिया, मिस कर दिया, छोड़ हो सकता है स्पेशलिटी केमिकल वाले हमने नहीं लिए, क्योंकि हमारे पास खाली एसआरएफ है. सो इन थियोरी ऑल द अदर्स व्हिच हैव गॉन अप like PI, CI, but I don't know whether at that time we felt seriously about wanting to buy. See, regret ऐसे नहीं होता है. Regret होता है कि आप मिले, आपने रिजेक्ट कर दिया और फिर वो चल गया. अगर आपको उस वक्त ख्याल ही नहीं आया तो उसमें क्या, ऐसे तो किसी चीजों का रिग्रेट होता है. आप मिले नहीं, आपने सोचा नहीं, never came up in your serious discussion except maybe some analyst report. ऐसे रिग्रेट तो फिर जिंदगी भर होते ही रहेंगे. कैटेगरी में कोई स्टॉक है सर जो आप मैनेजमेंट से मिले और फिर रिजेक्ट कर दिया और स्टॉक भाग गया? हाँ, that's what I'm saying ना, वो मैं सोच रहा हूँ कि कौन से वाला आपको अच्छा आंसर दिया जाए. वो पहले, by the way, just to tell you, इसमें मेरी थोड़ी अच्छी है. सबसे पहले I used to consider ये जो अपना स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनी का FT. So FT went up some 30, 50, 100 times. And what happened? That came, I think, IPO'd between my Alliance and Helios days. So I never, in those days, met the company because I was trying to set up Helios. And then the IPO, I think 2004 में हुआ था. So by the time we started in 2005, we used to say, यार ये कंपनी अब तो लेट हो गए, अब तो लेट हो गए, अब तो लेट हो गए करके कभी नहीं ली. And it used to go up every day. But it was not that we were not buying it because we thought he's bad guy. We were not buying it कि यार ये तो बड़ा चल गया यार, हमें उस वक्त नहीं पता था, उस वक्त नहीं पता था. And finally, we never ever bought it. So ऐसे होते हैं कई बारी, where you are looking at it from a distance and saying ये नहीं लिया, but पता नहीं, समय off top of the head नहीं आ रहा. कोई बात नहीं सर. A company which you are proud to own, sir, and you personally, found the company, मतलब Z और HDFC को छोड़ के. Z और HDFC को छोड़ के बजाज फाइनेंस हमने ढूंढी है, हमने नहीं, वो तो बहुत, वो तो कोई ना कोई, क्योंकि हमारा मॉडल ही अलग है ना. हम 2% लेते हैं, तो उसमें हमारे पास 15-20 बेट्स वी आर पुटिंग ऑन द टेबल. तो ऐसे तो सारी आ जाती है. हमारा डिक्सन भी टाइम पे आ गई थी, उससे पहले इंडिया मार्ट भी आ गई थी, तो हमने बेच भी दिया. ऐसे बहुत चीजें आ जाती है बिकॉज वी आर बिट मोर फ्लेक्सिबल इन बाइंग न्यूअर names in that sense. A company which has given you the biggest lesson of your life, मतलब जिसमें आपको लगता है कि सबसे बड़ी गलती इस कंपनी में हुआ, और जहाँ पे ऐसा होता है यार आपको कभी-कभी तंग करके जाए वो कि यार ये क्यों किया. I remember एस कुमार एक बार बात किया था आपने, या आर्शिया ने किया है. अच्छा, आर्शिया ने किया. एस कुमार में क्या था कि एस कुमार की स्टोरी जो थी ना, उससे भी लेसन सीखे. वो स्टोरी क्या थी कि दे हैड दिस सब्सिडरी रीड एंड टेलर. yes, एंड रीड एंड टेलर में हमारे यहाँ की सरकार ने कोई $250 million डाले और अब 24% या 25% स्टेक. yes, तो उस हिसाब से दैट कंपनी में उनका अपना स्टेक और 750 million, और कंपनी का अपना मार्केट कैप था $500-600 million. सही है. तो हम कहते थे यही कहानी कि यार ये तो नीचे सब्सिडरी इससे ज्यादा है, एंड अपने आप जो भी चला रहा है नहीं चला रहा है. सो ये भी चीजें सीखी है कि ये अंडरलाइन है, ये उसकी होल्डिंग कंपनी है, ये सब चीजें बिल्कुल ड्रामा है, कोई इनका मतलब नहीं है. Because every time, that's why we are not so much into this value business. I used to always hate in these olden days, these value guys like the Templeton type guys would come and buy India's worst companies that everybody in India knew were worst. 3 months later, it would come in the paper. They are complaining about the corporate governance to SEBI, to the Ministry of Finance, because they were trying to be activist. Actually, if you look at it, I used to say, तुम्हें पता तो था कि ऐसी कंपनी है, पहले तुम जाके खरीदते हो.
सही है. कहते हो बड़ी गलत है, या you want to improve it, which actually is a bad idea. But in those days I used to think like that कि दूर रहो इन सब चीजों से. So yeah, that way you can say that also was a lesson, but I forgot about that lesson. ये SOTP भी एक अजीब सा lesson है लाइफ का. बहुत बेकार है सर SOTP. So given a बेकार lesson है. given a chance to ask one question to Mr. Biden, you know, क्या होगा सर वो आपकी तरफ से? Mr. Biden. ये Mr. Trump आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? See, the thing is, I think next one will be very, very interesting, because I think Donald Trump will try. He's got 125 million even now for these. अभी जो Senate या कौन सी अभी होने हैं elections end of the year, Congress की Senate जो भी हो रहे हैं, even there he has been given money. Wow. To influence कि किस कैंडिडेट को सपोर्ट करे. ये तो ड्रामा होगा. बट बाइडेन के लिए क्या क्वेश्चन है मुझे नहीं पता. बाइडेन के मुझे. So what is the best thing sir you do in your time pass? मतलब क्या एक सी चीज है जो आपको मार्केट्स के अलावा सबसे अच्छा लगता है जहाँ पे आप? हम आपको दोनों चीजें दिखा सकते हैं. एक टीवी है, एक बुक्स है, दोनों पीछे नजर आ रही है. सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद. क्योंकि आपने बहुत चीजें सिखाई और कई चीजें मेरे दिमाग में भी बार बार आ रही है जो आपने बोला हुआ है. आई विल वांट टू रीड, यू नो, वॉच, लिख के एक एक वर्ड जो आपने बोला है दोबारा सीखूंगा सर, जो आपने हर एक चीज. मैं आपको भेज दूंगा जी अलग से. नो प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी बर्थडे. बेस्ट ऑफ लक. बाय बाय. थैंक यू समीर सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू.